Hello students, the topic for today is ecosystem from module 2 of energy and environmental engineering ES401 of RGPV. इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो हम कवर करेंगे दैट विल बी सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम्स के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, structure of ecosystem, Earth's energy balance, flow of energy in ecosystem, and energy utilization in the ecosystem. Environment is one's surroundings. It constitutes of three major segments: atmosphere, hydrosphere, lithosphere. और जहाँ भी इंटरेक्शन रहेगा लिविंग फॉर्म्स का इन तीनों सेगमेंट्स के साथ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर. Earth's atmosphere is a blanket of gases that surrounds the earth, जिसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.94%, वाटर वेपर 0.125%, माइनर कंपोनेंट्स आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%, सम ट्रेस कंपोनेंट्स जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, nitrous oxide, hydrogen, xenon, ozone, ammonia and iodine. This pie chart gives the contribution of major, minor and trace components as discussed earlier. Atmosphere के जो layers होते हैं वो 4 distinct regions में classified है: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. As such, atmosphere continuous होता है, but understanding purposes के लिए हम उसे 4 major regions में identify करते हैं. Beyond thermosphere, there is exosphere and outer space. Troposphere रेंज करता है 7 से 16 किलोमीटर्स के बीच में. Stratosphere approximately 50 kilometers. Mesosphere 80 kilometers and thermosphere till 500 kilometers from the Earth's surface. जो हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर में विथ एल्टीट्यूड इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जैसे यहाँ पे देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर, देन देयर इज अ रीजन जहाँ पर चेंज होगा टेम्परेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड पॉज. ट्रोपोस्फियर के बाद आ जाएगा ट्रोपोपॉज. इन स्ट्रेटोस्फियर देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, then there is a region of change of temperature called as stratopause. In mesosphere, again decrease in temperature, change of temperature, mesopause, and then thermosphere जिसमें temperature बढ़ता जाता है. So इस तरह का जो characteristics हम observe करते हैं उसे कहते हैं structure of atmosphere. Every region plays a significant role. जो मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटी होती है जैसे पैराशूट जंपिंग रहेगी, माउंटेन क्लाइंबिंग रहेगी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है. ट्रोपोपॉज रीजन में कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है. बियॉन्ड दैट देयर इज स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लीशन होता है विच ब्लॉक्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. मेसोस्फीयर रीजन में जो भी मीटियोराइट्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. थर्मोस्फीयर रीजन में देयर इज अ रीजन बिटवीन 100 to 4 किलोमीटर रिंग्स अपीयर होती हैं एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स ऑन अर्थ. देन 400 किलोमीटर्स के बियॉन्ड जो रीजन रहेगा वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट रोम करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एंड बियॉन्ड 600 to 800 kilometers the satellites keep rotating around the earth. So every region has certain specific chemical species जो ऑब्जर्व की जाती हैं. ट्रोपोस्फियर जो रेंज करता है till approximately 0 to 15 kilometers from the earth surface. इसमें टेम्परेचर घटता है from 15 डिग्री सेल्सियस to
-56 डिग्री सेल्सियस। मेजर स्पीसीज जो ऑब्जर्व हो रही है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -56 to -2 डिग्री सेल्सियस एंड ओजोन इज द मेजर स्पीसीज। मेसोस्फीयर में 50 to 85 किलोमीटर्स का एल्टीट्यूड रेंज होता है। हियर अगेन टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम -2 to -92। O2 प्लस और NO प्लस स्पीसीज रहती हैं प्रीडोमिनेंट। थर्मोस्फीयर में विच इज अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स, -92 to 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है। O2 plus, NO plus and O plus are the major chemical species. ऑल्दो यहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई है, लेकिन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स लो होने की वजह से अगर कोई एस्ट्रोनॉट इस रीजन में पहुँच जाता है और अपना हैंड एक्सपोज करता है तो उससे टेम्परेचर फील नहीं होगा, बिकॉज डेंसिटी बहुत लो रहती है इस पर्टिकुलर रीजन में। आयनोस्फीयर 100 to 400 किलोमीटर्स के बीच में होता है। O2 plus, NO plus और O plus ionic species present होती हैं majorly, and it plays a significant role in propagation of radio waves and lightning. लैप्स रेट एक ऐसा टर्म होता है जो टेम्परेचर का वेरिएशन देखता है विथ एल्टीट्यूड। जब हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का चैप्टर किया, टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट। हाइट के साथ जो भी चेंजेस ऑब्जर्व होंगे दैट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन टेम्परेचर ऑब्जर्व होंगे, दैट इज कॉल्ड एज लैप्स रेट। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मली हाइट के साथ टेम्परेचर घटना चाहिए, एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर घटना चाहिए। देन इन दैट केस अगर जिस रीजन में हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसमें हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा है, देन इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव लैप्स रेट। जहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव लैप्स रेट। सो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घट रहा है हाइट के साथ, सो पॉजिटिव लैप्स रेट। स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव लैप्स रेट। थर्मोस्फियर में अगेन बढ़ रहा है, इट इज़ अ नेगेटिव लैप्स रेट।